हाँ जी, Can I start? हाँ जी. Mrs. Rehana, wife of Mr. Khalid, 35 years old, have got formal education up to matric, housewife, married from 8 years, grabbed a 3 para, one with one miscarriage, last child born 5 years back by cesarean section with the last menstrual period 21st of May 2020, making her EDD 23rd of February 2021 with duration of pregnancy 31 weeks 5 days. Admitted through outpatient department of Sheikh Zayed Hospital, Ramia Khan on 28th of December with 8 months amenorrhea and her workup and evaluation of decreased amount of water around the baby. She conceived spontaneously with the regular cycle of 5 by 28 days and come to know by missing her periods. She confirmed pregnancy by urine pregnancy test nearby um, laboratory, and she booked herself to nearby clinic where her ultrasonography and certain tests were done, and she was advised um, um, tablet folic acid. Her ultrasonography and test were reassuring, but she does not know exact gestational age and date of the scan, and she took tablet folic acid often, and there is no history of excessive nausea, vomiting, lower abdomen pain, vaginal discharge, fever with flu-like illness, and rash. She felt quickening at the 4th month, and her anomaly scan was done at 5 months of pregnancy, and there was no gross fetal anomaly, especially renal anomalies, and her she took regularly hematinics and a regular antenatal visit. Her blood and urine tests were performed, and all was reassuring. There is no history of polyuria, polydipsia, polyphagia, easy fatigability, shortness of breath, and palpitation, heat and cold intolerance, and there is no history of headache, blurring of vision, epigastric pain, and swelling of the legs, and swelling of the legs, flank pain. She continued regular hematinics, and during her antenatal visit in mm, during her antenatal visit in outpatient department, her ultrasonography routine antenatal visit, her ultrasonography was performed, and she was told that there is a decreased amount of water around the baby, and was admitted for further evaluation of management in ward. Here, her certain blood and urine tests have been performed, and but plan is not further plan is not discussed with her. Regarding her obstetrical history, her first pregnancy was spontaneous conception, complicated by missed miscarriage, with complicated by spontaneous expulsion. There is no history of evacuation, and sample not sent for histopathology. Her second pregnancy was also booked pregnancy, spontaneous conception, and delivered by cesarean section 5 years back, alive, healthy male baby, breastfed and vaccinated. There is no antepartum, intrapartum, and postpartum complication. Regarding her gynecological history, her age of menarche 13 years with regular cycle of 5 by 28 days with average flow, no history of dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual bleeding, postnatal bleeding, never practiced any contraception, and pap smear was never taken. Regarding her family history, there is no history of diabetes, hypertension, ischemic heart disease, chronic renal or liver disease, asthma, TB in her and in her family, and there is no history of twin pregnancy, thalassemia, and abnormal babies in her family. Regarding past surgical history, there is no other gynecological surgery, and only history of one cesarean section. Her husband is a shopkeeper. And regarding socioeconomic status, her husband is shopkeeper, earn 10 to 15 thousand per month, and they live in their own house, and daily necessities of life are fulfilled with difficulty. Regarding her personal history, she is a non-smoker, non-addict with normal sleep and bowel habits.
On journal physical examination, a 35 years old lady, well oriented in time, place, and person, sitting comfortably on couch with height of 150 centimeters and weight 60 kg, making her BMI 26 kilogram per meter square, looking pale and looking pale, no clubbing, colonical, econical jaundice, cyanosis, pedal and sacral edema, orodental hygiene satisfactory, thyroid not enlarged with thyroid not enlarged, and both breasts are symmetrical in shape, and there is no mass in all the four quadrants, no mass felt in all the four quadrants, and respiratory system normal, vesicular breathing with no added sound on heart auscultation. First and second heart sounds are audible with no added sound. On inspection of abdomen, abdomen is protuberant with the scar mark of previous cesarean with striate gravidarum. There is no visible pulsation and prominent veins, and hernial orifices are intact. On palpation, no superficial tenderness, and fundal height of about 28 centimeter, lie longitudinal, presentation cephalic, lighter seem to be reduced, and estimated fetal weight of about 1.5 kg, and fetal heart sounds of 146 beat per minute. चलें रक्षा जी आप इन्वेस्टिगेशन Okay, what you need on investigations? ब्लड ग्रुप RH फैक्टर, A negative. indirect womb test, Why you need indirect cause test? husband blood group, O negative. complete blood count with HB gram per deciliter, Hemoglobin 9 gram per deciliter. and TLC and platelet. TLC, TLC 11,000. platelet, Platelets 150,000. blood sugar random, 130. urine complete examination for urine for microscopy for pus cell, and biochemistry for sugar and protein. 6 to 8 parcels glucose and protein need. Urine culture sensitivity, Not available. hepatitis B surface antigen, anti-HCV antibody, Negative. रक्षा जी मुझे peripheral smear और RBC indices MCV, MCH and MCHC, All indices decreased. serum ferritin, Not done. and peripheral smear, Peripheral smear microcytic hypochromy. ultrasonography with dating scan, Dating and anomaly scan normal. recent scan, We'll discuss later.
Color Doppler, Why you need color Doppler? as there is decreased amount of liquor around the baby. What is cause of decreased amount of liquor around fetus? It may be due to preprom, may be due to increased blood pressure, and Is maybe there any history of uh, raised blood pressure in your patient? no. Then, what is complaint of your patient? Patient on history, patient never gives any clue for decreased amount of labor. It was an accidental finding on routine antenatal visit on scan. Okay, Doppler is normal. Uh, Any other investigation you want? in इन्वेस्टिगेशन तो मेरी पूरी हो गई है, बस वो स्कैन दे दें, रिसेंट स्कैन. Recent ultrasound will discuss later. Summarize. 35 years old lady, Gravida 3 para 1 with one miscarriage, last child 5 years, with 31 week and 5 days gestational amenorrhea and decreased amount of water around the baby on uh, pale looking with fundal height of 28 centimeter, lie longitudinal, presentation prophyllic, lighter seems to be reduced, and estimated fetal weight of 1.5 kg with fetal heart sounds of 146 beats per minute. And urinary Okay. tract with urinary What are tract these factors infection in and your iron patient? deficiency. This factor in my patient are Rh negative and anemia, Okay. urinary tract infection, Okay. and poor socioeconomic status. How will you manage it? First of all, I will explain the diagnosis to the couple that it is a high risk pregnancy, and I will give tell about the fetal-maternal complication. Will tell about possible hospital stay, and will काइंडली मुझे पहले ना क्या स्कैन दे दें, डायग्नोसिस बताइए फिर उसके मरीज बाद को? मैंने डॉक्टर फरजाना, डिक्रीज अमाउंट ऑफ लाइक कैसे पता चला? स्कैन दे दे मुझे पहले, बहुत मैंने हिस्ट्री पे ही बता दिए. Okay, what you need on ultrasound? Ultrasonography for biometry, Biometry is corresponding to gestation, DPD, female length, longitudinal breech, जी, and AFI is 6, placenta upper segment. Doppler normal. fetal heart sounds, FCA positive. cardiac activity, Cardiac activity present. जी, and abdominal circumference, Abdominal circumference normal. जी. On the basis of investigation and ultrasonography finding, I will consult the couple regarding her diagnosis, and will tell about fetal-maternal implication. Will tell What is her possible hospital diagnosis? stay, and 31-week pregnancy with slightly
mild oligohydramnios What is definition of mild oligohydramnios? and breach less than 5 mild oligohydramnios. And what is 5 to FI in your 25 patient? normal होता है, Then what is less FI than of 5 your and patient? patient 6 Is it normal or normal है, abnormal? Then why you normal है attend? breach है Okay, manager. with normal liquor and breach presentation with Hmm. anemia, urinary tract infection, and I will correct her. First of all, I will manage her anemia. Will correct her urinary tract infection and with previous one scar भी है ना. With correct her anemia, prolong pregnancy as close to term as possible, and to decide the safest mode and time of delivery. For correction of anemia, first of all, I will, as my patient having 9 gram HB and gestational amenorrhea of 31 weeks, so I will give her a dietary advice to take green leafy vegetables, meat, egg, milk with the orange juice and not with the milk, or also avoid from excessive tea, coffee, and will empirically deworm the patient by giving tablet mebendazole 100 milligram 1 BD for 3 days, and will start as my patient is not symptomatic and is compliant with oral iron. So I will give her therapeutic dose of oral iron tablet ferrous sulfate 1 BD for 1 BD, and will ask and for urinary tract infection, I will start capsule amoxil 500 milligram 1 TDS, and will then review her drug after culture sensitivity report and culture sensitivity report, and will continue her will review her iron HB on 10th day. If there is increase in retic count then more than 2%, then I will continue the treatment for on oral iron, and will give her steroid on 34 weeks, and at 36 week I will discuss her with safe with contraception and contraception, breastfeeding, and mm, will review her investigation, and I will also discuss the patient with the uh, um, her, mode of delivery as the patient is having, and will assess the ultrasonography finding, and will review her previous record of cesarean section, whether it Why is you have done by not reviewed low her segment record cesarean section previously? Was it important to 36 वीक ask? पे कर रही हूँ ना अभी. 31 वीक पे प्रीवियस सी सेक्शन का रिकॉर्ड देख जी लेते तो क्या हो जाना था. वो अभी पोजीशन तो चेंज हो सकती है ना. पोजीशन चेंज हो अभी भी जाएगी लेकिन उसका रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा. रिकॉर्ड, हाँ जी, रिकॉर्ड नहीं चेंज होगा, रिकॉर्ड तो वही रहेगा. Why you have not asked in investigations? आपको पता था ना अगर ये किफेलिक हो गया तो ये शी नहीं माइट विश फॉर वी बैक. 2 लाख, हाँ जी. Then why? Without reviewing her record of previous भूल गया. C-section, can you offer her V back? नहीं, उसके नहीं, रिकॉर्ड देखूंगी तो फिर ही पे ऑफर Then करूंगी ना. how will you decide her mode of delivery and time of delivery? I I will check her previous record of cesarean section, whether it is done by low segment cesarean section or classical cesarean section, and whether done by trained person at setup What is and criteria previous for trained person, Dr. Fazana? intra. What is ड्रग से criteria वो for trained person and setup? आपका मतलब है देखिए अगर मैं यहाँ बाजूकात जो अपने है ना वो सेटअप पे करूंगी कोई सी सेक्शन तो उसे हम ट्रायल नहीं देंगे, और अगर टर्शरी केयर में कोई हाउस ऑफिसर करेगा तो उसे हम दे देंगे. देंगे. देखिए आप तो ट्रेन है ना, नहीं लेकिन नहीं, बाहर प्राइवेट में जैसे हो रहे थे ना, तो वहां पे डिस्पेंसर और वो आपने सारे कर बोला रहे कि होते थे, आई विल तो वो लुक फॉर सेटअप तो सेटअप देखना है ना. एंड ट्रेन पर्सन. हो सकता है ना अब यहाँ एक्स पे मेरे सेटअप पे भी मैं किसी एचओ से करवा दूं
टीचिंग हॉस्पिटल में हाउस ऑफिसर ने किया हो। लेकिन वो डॉक्टर तो होगा ना, डॉक्टर तो होगा ना। हाउ विल यू कंफर्म कि ये डॉक्टर ने खुद किया है? Expertise and facilities is not included in indication or contraindication of VBAC. It's only the type of scar, either classical or lower segment. ये हमारे सेल्फ मेड प्रोटोकॉल्स हैं। कहीं गाइडलाइन में पढ़ा है आपने कि नहीं, ट्रेन वहां पे पर्सन तो ने नहीं की? पढ़ा, आपने बुक में लिखा हुआ है। मैंने भी गलत लिखा हुआ है, अब मैं अगले एडिशन में चेंज कर दूंगी इसे। बस फिर सही है, मैंने तो उसमें रटा मारा हुआ है। इसलिए कि जो आपकी गाइडलाइन है वीबैक की, उसमें दी ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन टू वीबैक इज क्लासिकल स्कार। जी जी। And I will also check the finding on ultrasonography whether position has been changed from breech to cephalic or not. If it remain breech, then I will plan for elective cesarean section at 39 weeks. And if there is a um, uh, cephalic presentation, then I will consult the patient for VPAC after taking all the contraindication and indication for normal vaginal delivery, and will consult the patient regarding vaginal delivery that there are 75% chances of VBAC with on non-recurrent cause, and will also tell about the pros and cons of the um, normal vaginal delivery, and will also tell about the risk of rupture 1 into 200, and if my patient is willing पेशेंट से for पूछा था delivery, क्या then I चाहती है, इज शी फीलिंग फॉर वीबैक और नॉट? नहीं, मैंने पूछ रही, वही तो कहा, आई विल विश फॉर फिर द इसके पेशेंट। लिए तब क्यों नहीं पूछा डॉक्टर फरजाना? अभी तो 31 वीक थे ना, 36 पे ही पूछूंगा, मैं तो उस पर बुकिंग पे ही डिस्कस पूछ करना ना। लेती हूँ मरीज से। बेटा नहीं, लेकिन रक्षा जी ये देखे ना, अभी 31 वीक पे ब्रीच है, अभी तो हमने उस पर काम पे देखना है ना कि उसकी अगर पोजीशन वो होगी तो फैलिक, तो फिर ही मैंने उस पर डिस्कस करना ना उससे। बुकिंग पे तो मैं उससे नहीं पूछ डॉक्टर सकती। फरजाना, अगर आप मेरे हाँ पास जी। आ जाए, बुकिंग पे भी आ जाए ना, तो मैंने आपसे बुकिंग पे ही हाँ पूछ लेना है डॉक्टर फरजाना, अगर एंड तक कोई मसला ना हुआ और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती हुई, तो क्या आप करवाना चाहेंगी या हाँ, नहीं? आप क्या जवाब देंगी? ये तो पेशेंट की विश ही होगी, फिर उसी पे तो डिसाइड करना। पेशेंट इतना तो बता सकता है ना कि अगर कोई मसला ना हाँ, हुआ तो मैं जरूर बता नॉर्मल सकता ना। डिलीवरी हाँ करवा लूंगी। या दूसरा जवाब ये होगा, अगर कोई मसला ना भी हुआ फिर भी मैंने डॉक्टर साहबा करवाना ऑपरेशन ही है, मैंने किसी सूरत नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी। इसके अलावा कोई तीसरा जवाब हो सकता है? नहीं। तो फिर जब आप सुनिए, मुझे ना इसलिए जब ऑयल कहते लगाओगे हैं, ना, बस ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे ना बनाओ, क्योंकि तो इतना बाल पेशेंट टूटते हैं के इसलिए। इसलिए कि ऐसे एग्जाम ऐसे में करें। पेशेंट आपके पास एक ही वक्त में होता है, फिर वो चला जाता है। आपने उसी वक्त मरीज से पूछ लेना है कि अगर एंड तक कोई मसला ना हुआ और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती हुई, तो क्या आप नॉर्मल जी डिलीवरी का ट्रायल लेना चाहेंगी या आपने डायरेक्ट ऑपरेशन ही करवाना है? ये अपने सही। प्रीवियस वन में ऐड कर लें, और इन्वेस्टिगेशन में आप प्रीवियस वन का रिकॉर्ड जरूर देखते हैं। ये वीबैक की दो ही ठीक है चीजें हैं जो करनी होती हैं आपने। अगर पेशेंट ही कह दे कि मैंने इलेक्टिव सेक्शन करवाना है, तो आपकी आधी मुसीबत खत्म हो जाती है। जी। इसलिए कि अब विश एग्जाम और में तो प्रीवियस पेशेंट आपके रिकॉर्ड। पास दोबारा नहीं आएगा ना। अगर कोई हाँ जी, वो प्रीवियस तो थ्री उसी फोर वक्त। फाइव है, 40 ईयर है, 35 ईयर है, तो आप उससे वो तो कॉन्ट्रासेप्शन भी कंफर्म है। उसी वक्त डिस्कस करते हैं, चाहे वो 20 वीक्स पे क्यों ना हो, कि इस बच्चे के बाद आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्या प्लान करना चाहेंगे। क्या वो पीपीआईयूसीडी तो चाहती ये है? भी वो मैंने उससे उसी वक्त ही पूछ लेना है, उसी वक्त पूछ जब वो लेना ना हिस्ट्री डॉक्टर ले। फरजाना। देखें एग्जाम में पेशेंट आपके पास दोबारा होगा या नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, प्रीवियस 4 है, और अगर उसकी हाँ, यूट्रस बच जाती है, तो क्या आप उसकी बीटीएल नहीं करेंगी? करेंगे। और एग्जाम में आपने मरीज को डिलीवर करवा के कॉन्ट्रासेप्शन दे के
घर भेज के नेक्स्ट प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करके आना है। ठीक। एग्जाम में आपका एफ सही इफ और देन वाली कोई बात नहीं होता। आपको पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन पता होती है और आप बताते हैं कि एज माय पेशेंट इज दिस 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 एज शी वांट्स दिस सो आई विल डू दिस। ये अब आप याद कर लें। सही हिस्ट्री के एंड पे पेशेंट से सही है। मोड ऑफ डिलीवरी जरूर डिस्कस कर लेना है और पेशेंट से कॉन्ट्रासेप्शन के लिए स्पेसिफिकली जिसकी कोई स्टरलाइजेशन बनती हो या बिल्कुल ही शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल जी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो। कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जो कहते हैं हमने मिसकैरेज के लिए दवाई खाई थी, हुआ नहीं है। उससे भी अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन नहीं डिस्कस करते तो फिर ये जुल्म है ना। ऑल्दो आप अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट से बाद में डिस्कस कर सकते हैं, बट एग्जाम में क्योंकि आपका एक ही कांटेक्ट होना है मेरे पेशेंट के साथ। ठीक। ओके देन। अब वी बैक करवाऊं या अब देखें, आपने ब्रीच मरीज से करूं? पूछा ही नहीं हुआ तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगी? पेशेंट तो चला गया। ये नहीं कि नहीं, आप अब उसे ब्रीच पे ही मैं तो कह इस पे दें, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कोई अगर कॉन्ट्रा हाँ इंडिकेशन आ गई फिर तो आप उसे ऑफर ही नहीं करेंगी वीबैक। आप उससे ही बात जी पूछते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना हुई और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती हुई तो क्या आप करवाना चाहेंगी? जी। इतनी सी बात आप पूछ लेती तो अब आपको मोड ऑफ डिलीवरी में मसला ना होता। अब बताएं फिर क्या करना है। ये छोड़ दें, अब उससे अब उसको दोबारा मैंने पूछ के आए वो क्या चाहती है, फिर इसकी डिलीवरी प्लान करेंगे। ठीक। सही। वो मेरी पेशेंट अगर चाहती है कि मैं वो नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहती है तो फिर मैं उसे ट्रायल दूंगी। ओके। 41 वीक तक उसके स्पॉन्टेनियस के लिए वो वेट करूंगी। और अगर वो ठीक है। लेबर में जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर 41 वीक पे मैं उसका स्कैन करूंगी, लाइक कर हम्म। देखूंगी, बिशप हम्म। असेस करूंगी। अगर हम्म। फेवरेबल है तो मैं उसे ट्रायल दूंगी, नहीं तो फिर उसका सिजेरियन कर नहीं तो फिर आप उससे इंडक्शन डिस्कस करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं करूंगी, क्योंकि प्रीवियस कार में जो है ना रप्चर के चांसेस इज है। इंडक्शन ऑफ लेबर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रीवियस कार? इसने 41 तक वेट कर लिया और अगर स्टिल कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, विल यू ऑफर हर इंडक्शन ऑफ लेबर और नॉट? देखिए रक्षा जी, मैं उसके बिशप असेस कर लूंगी ना, अगर पुअर है तो मैं सिजेरियन कर कौन दूंगी, से बिशप पे अगर बेहतर इंडक्शन है ऑफ तो फिर लेबर कॉन्ट्रा उसके लिए इंडिकेटेड है? कौन से एट बिशप पे करना इंडिकेटेड है? हम्म 6 पे। कहाँ लिखा है? 6 तक। बिशप अगर 6 है तो आपने इंड्यूस नहीं करना। इसका कोई रेफरेंस है? बिशप 6 है तो, लेकिन प्रीवियस वन में इंडक्शन हमने 6 से कम है ना, 6 पे तो फेवरेबल कहाँ लिखा है डॉक्टर फरजाना? है। अगर लिखा है तो मुझे भी भेज दे, मेरी भी प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाए कि 6 पे किसी मरीज को इंड्यूस नहीं करना। बिशप इज नॉट ए कॉन्ट्रा अच्छा इंडिकेशन चले, मैं फॉर आपको एनी। ढूंढ ओके ओके, आप अगर वाकई ऐसा कहीं है तो आप मुझे ढूंढ के भेज दें, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि किसी बिशप पे इंडक्शन ऑफ लेबर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मुझे ये नहीं, तो पता है कि प्रीवियस सिर्फ कार में मैंने उसको इंडक्शन देनी है, सिर्फ उसमें वो फिर अगर मल्टी है तो चलो उसमें तो स्वीपनिंग कर देंगे, लेकिन अगर वो प्रीवियस वन है और जो है ना पहले उसकी कोई भी बैक नहीं है या नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, तो उसमें तो फिर कम चांस है ना, फिर उसमें मैं उसे प्रोस्टेन दूंगी क्या? कर सकते हैं, लेकिन विजिलेंट मॉनिटरिंग के साथ, 1-to-1 मॉनिटरिंग। हेलो। ना
आप हेलो, हाँ जी। पेशेंट का बिशप असेस करेंगे और स्टिल आप पेशेंट को ऑप्शंस देंगे। अगर पुअर बिशप भी है तो आपने उसे ये बता देना है कि देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ फेलियर ऑफ इंडक्शन, बट इंडक्शन इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर वो ट्रायल ऑफ इंडक्शन लेना चाहती है तो स्टिल यू विल इंड्यूस हर। सही। तो फिर मैं उसे प्रोस्टेन दे दूंगी, दे रख दे। दूंगी। प्रोस्टेन कौन विजिलेंट सा कॉन्ट्रा मॉनिटरिंग, इंडिकेटेड है? प्रोस्टेन रख के विजिलेंट मॉनिटरिंग करूंगी। हाँ, 1-to-1 मॉनिटरिंग करें। और ये यहाँ पे इंड्यूस करते भी हैं पेशेंट्स को, ऐसा नहीं है कि ये हाँ, सिर्फ किताबी बात है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, हमीद लतीफ में, हर जगह ये प्रीवियस वन इंड्यूस होते हैं जहाँ 1-to-1 मॉनिटरिंग है। सही। क्योंकि हमारे सेटअप में तो नहीं होता ना, फिर बस उस तक हम देख आपके लेते डॉक्टर 41 वीक फरजाना तक। डिग्री पे सिर्फ नहीं वैलिड गए फॉर तो फिर आप शेखजाद नहीं सेक्शन लिखा होगा। हो सकता है जी, कल आप यूरोप चली जाएं, फिर हम वहीं से ही अल्लाह कहेंगे करे। डॉक्टर फरजाना कोई नई गाइडलाइन भेज दें RCOG से। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसलिए ब्रॉड विजन रखें। दुशाजिया इंशाल्लाह। जो चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है वो आप दुशाजिया इस जरूर पेशेंट ऑफर करते हैं। सही। डॉक्टर फरजाना दुशाजिया इस आपने पेशेंट को हम 40 हाँ जी। आपने अब गायनी के केसेस करने हैं, सिर्फ लास्ट वीक में 1-2 ऑप्स के करने हैं। हाँ जी, बस मैं वो कल मैंने इनफर्टिलिटी प्रेजेंट करना है, आज मैं तैयार कर लूँ फिर कल ठीक करूँ। है, ठीक है। हाँ जी, ठीक। और दुशाजिया इस पेशेंट को हम चलें 40 अब। वीक से स्वीपिंग ऑफर कर सकते हैं। स्वीपिंग 40 वीक्स पे भी हम प्राइमी को करते हैं, मल्टी को 41 पे करते हैं। प्रीवियस वन है तो 40 पे नहीं, कर ये देंगे। पेशेंट जिसका ये पेशेंट सॉर्ट ऑफ प्राइमी ही होगी ना, इसकी पहले डिलीवरी तो नहीं हुई हुई, ये शी इज ग्रेविडा टू, मतलब इसका बिल्कुल हम इसको ऑफर हम कर सकते हैं 40 वीक्स पे स्वीपिंग। तो इसको एज अ प्राइमी कंसिडर करेंगे ना, फिर हम 40 वीक से ही करेंगे ना इसको भी ऑफर, या 39 या 41 पे तो हमें डिलीवरी प्लान करनी है इसकी, तो 1 वीक पहले ही करेंगे। 1 वीक पहले करेंगे इसलिए कि हमने 41 पे इसे डिलीवर करवा देना है। 40 पे करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। और अगर आपका पेशेंट विलिंग एंड वेल मोटिवेटेड फॉर वीबैक है तो यू आर नॉट सपोज टू विथड्रॉ इंडक्शन ऑफ लेबर। अगर पेशेंट विलिंग नहीं है तो फिर आप कभी भी इंड्यूस नहीं करते। पेशेंट विलिंग है, वेल मोटिवेटेड है और वो इंडक्शन चाहती है, आप उसे इंड्यूस करोगे। सही। ठीक है। वैसे ठीक। स्वीपनिंग के बड़े अच्छे इफेक्ट होते हैं, उससे भी पेशेंट काफी लेबर में चला जाता है, अगर आप 1 वीक हाँ, से कर लो ना स्वीपनिंग, ऐसे ही उससे। है। डॉक्टर पे करेंगे ना? हाँ, इलेक्टिव हम इसका 39 पे कर देंगे हाँ, ठीक है, विद डेक्सा कवर। विथ स्टीरॉइड कवर। ठीक ठीक।